Start. Hello students, good morning. Welcome to BIREN'S Academy. Students, आज तुमर ग्रामर रो क्लास अछि. तुम जानि छु टाइमिंग टा चेंज जाइछि. मॉर्निंग 8 to 9 am तुमर क्लास हबो ग्रामर रो. ओके, को दिन हबो? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे. ओके, सो जल्दी जल्दी सब जॉइन हो जाओ. आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक गोटे करिया. ओके, द टॉपिक नेम इज एरर. ओके, द टॉपिक नेम इज एरर. ओके, फटाफट सब जॉइन हो जाओ. तो मो क्लास टाइमिंग कहा लास्ट क्लास रे. ओके, ठीक अच्छे. लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है. अपने मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है. ओके, निजे हार्डवर्क करिया, निजे सक्सेस को टच करिया. ओके, विथ दिस फर्स्ट क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन कहूँ, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स एरर. ओके, मेक श्योर ए टाइप रो क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो. तुम आरआई एमिन एग्जाम दियो. ओके, आउ कौन से भी एग्जाम दियो, एमटीएस लेवल एग्जाम क्वेश्चन रे भी स्पॉट द एरर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आसे. ओके, तो ए दिन से जदी हमें फ्लुएंट ही जीवा, बहुत मार्क फेचिंग ही जीवा हम पई. ओके, बुझिलो. देखो, हमको एरर स्पॉट करियार छे. तुमको चारटा ऑप्शन दिया थिबो. ओके, से गोटे ही सेंटेंस थिबो, ता भीतर कोठी गोटे भूल थिबो. ओके, तो सेई भूलटा को स्पॉट करियार अछि, को ऑप्शन रे भूल अछि. ओके, एति के जिंस ही करियार अछि. नो सूनर हैड ही एंटर्ड, नो सूनर हैड ही एंटर्ड into the room when he was attacked by a group of masked men. Okay, question रो मीनिंग बुझिलो. no sooner had he entered, क्वेश्चन कौन कहूची, no sooner had he entered into the room when he was attacked by a group of masked men. Okay, देखो क्वेश्चन कौन टेस्ट करूची, तमर नॉलेज ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शन टेस्ट करूची. नॉलेज ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शन टेस्ट करूची क्वेश्चन. ठीक अच्छे, कोरिलेटिव कंजक्शन नो सूनर संगे कौन लगेगा. ओके, देखो ऑप्शन ए रे देखो, नो सूनर हैड ही एंटर्ड. इज दिस ग्रामेटिकली करेक्ट? इज दिस ग्रामेटिकली करेक्ट? हाँ, करेक्ट अच्छे. कहीं कि नो सूनर सब बोले पास्ट परफेक्ट टेंस संगे लगे. इटी पास्ट परफेक्ट टेंस कौन अच्छी, हैड अच्छी, हैड ही एंटर्ड. तो फर्स्ट ऑप्शन टा तो हमें जानी गलु करेक्ट अच्छी. इनटू द रूम, इनटू द रूम, एंटर इनटू द रूम हबो, एंटर द रूम हबो. ए बोथ आर करेक्ट. ओके, दिस बोथ आर करेक्ट. ओके, कौन पाई करेक्ट अच्छी? देखो, एंटर इनटू द रूम, it's a more formal sense. Okay, enter into the room, enter the room is also used. Okay, so both case रे हमें देखी पारिबा into the room is correct. Okay, एबे प्रॉब्लम कोठी होचे ना, when he was attacked, when he was attacked, when he was attacked. Okay, कुह एठी भूल कोन हैला. अरे बाबा, नो सूनर जते बेले हमें यूज करछु, नो सूनर, नो सूनर वाला क्वेश्चन आसे रे. नो सूनर को हमें को टाइप को जिंस संगे पेयर करछु. नो सूनर हैड ही एंटर्ड इनटू द रूम व्हेन ही वाज अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मास्क्ड मैन. क्वेश्चन ये लिखा है, बट एक्चुअली नो सूनर को हमें पेयर को जिंस संगे करछु. नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम then he was attacked. Okay, ए जिंसटा ही भूल है वाला. Okay, तो what is the correction you will make here? That when will not be there, instead of when we will use then, because with no sooner we use then. Okay, no sooner had he entered into the room then he was attacked by a group of masked men. एटा ठीक अच्छे. प्रॉब्लम कोठी हला ए नंबर है, तो सी नंबर हमर एरर अच्छी. पॉइंट नंबर सी इज एरर.
ओके फॉर्मेट कौन होची नो सुनर प्लस पास्ट पार्टिसिपल ओके नो सुनर प्लस पास्ट पार्टिसिपल ओके जोटा तुम्हार हेड अच्छी प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस देन ओके बाकी जहाँ अच्छे ओके तो ए लाइन रे कौन हिजिबो नो सुनर हैड ही एंटर्ड इनटू द रूम देन ही वाज अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मास्क्ड मैन एटे क्लियर हैला ए क्वेश्चन टा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो स्पॉट द एरर स्कैर्सली एटा गोटे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अछि स्कैर्सली यूज हबो had the teacher entered the class scarcely had the teacher entered the class when the students started making noise and throwing paper planes scarcely had the teacher entered the class when the students started making noise and throwing paper planes क्वेश्चन टाको एनालाइज करो देखो एटा गोटे इन्वर्टेड सेंटेंस हमें कहि परिबा scarcely had the teacher entered the class okay it is a inverted sentence कौन पई अछि है कि scarcely संगे had लगाई छी okay past perfect tense लगाई छी ना scarcely had the teacher entered the class when the students started making noise but go which number which option is incorrect and why which option is incorrect and why scarcely had the teacher entered the class एतिकी तो ठीक अछि inverted sentence अछि scarcely संगे past participle past perfect लागि छी ठीक अछि when the students started making noise and throwing paper planes को देखो स्कैर्सली लगाई छे स्कैर्सली माने टिके अल्प स्कैर्सली हैड द टीचर एंटर द क्लास ता पूर्व रे पिला माने स्टाउट करिया स्टार्ट कर देथिले आ पेपर प्लेन पड़िया स्टार्ट कर देथिले ओके तो व्हाट वी विल पेयर स्कार्सली द टीचर एंटर हैड द टीचर एंटर द क्लास इट ठीक अछि व्हेन द स्टूडेंट started making noise and throwing paper planes okay तो scarcely संगे हमें सब बेले कौन पेयर करछु scarcely had the teacher entered the class before before the student started making noise and throwing paper planes एति क्लियर अछि तो ए टाइप ऑफ क्वेश्चन जते बेले आसीबो ताको फेस करियारो हमर एफर्ट को हिसाब रे हम केमती फेस कर scarcely आसीबो तो बिफोर देखिबो ओके बहुत केसेस scarcely संगे when दे देता है then दे देता है ओके सी नंबर टा ठीक अछि पास्ट सिंपल फॉर्म रे अछि थ्रोइंग पेपर प्लेन कंटिन्यूएशन अछि ओटे ठीक अछि तो फार्मूला कोन हमर होछि scarcely plus part perfect had the teacher entered the class before simple past ओके scarcely संगे हमें बिफोर लगो ओके ठीक अच्छे सी द नेक्स्ट क्वेश्चन टू टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हमें फेस कलो ए दीटा बहुत इंपोर्टेंट अच्छे ओके ए टाइप ऑफ क्वेश्चंस आसे स्कार्सली संगे सब बेले कोन लागिवो स्कार्सली संगे कोन लागिवो बिफोर लागिवो ओके और एठी कोन थिला नो सुनर संगे कोन लागिवो देन लागिवो नोट कर देता है सब जिनसटा तापर देखो स्पॉट द एरर नाइदर द बॉयज हैव डन देयर होमवर्क ऑल्दो दे वर गिवन एनफ टाइम टू फिनिश स्पॉट द एरर नाइदर ऑफ द बॉयज हैव डन देयर होमवर्क ऑल्दो दे वर गिवन एनफ टाइम टू फिनिश एटारे एरर को ऑप्शन रे अछि एरर को ऑप्शन रे अछि neither of the boys
नाइदर ऑफ द बॉयज ओके नाइदर नाइदर को जगह आम लगो गुड मॉर्निंग हैज डन कौन पाई हैज डन हम गुड मॉर्निंग कौन पाई हैज डन हम कहीं आम नाइदर यूज करछु ना ये नाइदर कौन अच्छी सिंगुलर अच्छे जड़े भी बॉयज भितर तो हैव डन आम केमती लगे पारिबा ओके तो सिंगुलर फॉर्म लगेबा ओके सेति पय आमे कोन लगोछु हैज लगोछु सिंगुलर फॉर्म ऊपर नाइदर ऑफ द बॉयज हैज डन देयर होमवर्क ऑल्दो दे वर गिवन enough time to finish neither of the boys so has done not have okay very good Sasmita okay है कि सिंगुलर अच्छी ना neither of the boys जने भी बॉयज भितरु केही करनांती ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखो spot the error each of the participants were given a certificate and a token of appreciation at the end of seminar each of the participants were given a certificate and a token देखिए कहते आंसर टा कोन होबो हाँ each of singular was given each so singular was given very good each अच्छी सेति पय each अच्छी ना each of the participants भाभी तो 20 टा पार्टिसिपेंट थिबे तो जण को ओके हर कोई को गोटे गोटे सर्टिफिकेट दिया है गुड मॉर्निंग मिकू ओके वेर गिवन अ सर्टिफिकेट तो वेर गिवन न हबो हेई कि सेठी कोन हबो वाज गिवन अ सर्टिफिकेट काहे कि सिंगुलर अछि each सेति पय ओके क्लियर अछि तापर क्वेश्चन 4 टा बुझी आसला spot the error the manager as well as the employees were present at the launch event to welcome the chief guest verb ऊपर फोकस करो क्वेश्चन कौन टेस्ट करता हूं एबिलिटी टू डील विथ कंपाउंड सेंटेंस ओके द मैनेजर एज वेल एज द एम्प्लॉइज वेर प्रेजेंट एट द लॉन्च इवेंट टू वेलकम द चीफ गेस्ट द मैनेजर देखो एठी क्वेश्चन रो झोल एठी अछि ए जिंस रे ही सब अछि द मैनेजर एज वेल एज द एम्प्लॉय इट मे लुक प्लूरल बट एक्चुअली इट इज सिंगुलर एटा प्लूरल दिसुची बट एक्चुअली एटा सिंगुलर कौन पाई सब्जेक्ट की अच्छी द मैनेजर इज द सब्जेक्ट और जो फ्रेज लगाई छी एज वेल एज ये सब्जेक्ट को प्लूरल करे पाई माने द वर्ब विल अकॉर्डिंग टू द मैनेजर सो वाज प्रेजेंट ठीक है ठीक अच्छे तो मैनेजर आमर सब्जेक्ट अच्छे दैट्स व्हाई दिस इज सिंगुलर सब खेल ये वर्ब ही अच्छे ओके वाज प्रेजेंट एट द लॉन्च इवेंट वाज प्रेजेंट एट द लॉन्च इवेंट टू वेलकम द चीफ गेस्ट ओके प्राय टाइम देखिबो ये वेयर वाज वी ये सब जिंस जोटी थिबो ता ऊपर बेसी फोकस करिवो मेंस पेपर टा शॉर्टली होबो नोटिफिकेशन आसीबो आजी गोटे मस्त किना नोटिफिकेशन आछे सी सेटा तमे जाई कि टिके देखि देइथिबो सब डिपार्टमेंट रे भारी ची टोटल 42 की 44 डिपार्टमेंट से टोटल वैकेंसी आछे एटा डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस रे होचे एटा टिके रेफर कर देथिबो गोटे वीडियो शॉर्टली अपलोड हिजो ता विषय रे सर बुझुथिबे जणे ओके ताको श्योर अप्लाई करिवो spot the error if I was you I would not make such a careless mistake in front of the examiner
Okay, if I was you, I would not make such a careless mistake in front of the examiner. Spot the error. Error spot करो कोठी अछि. If I was you, जदि मु तमे ହେଇଥାନ୍ତି, जदि okay, अगर मैं तुम होता, देखो इट्स एन इमेजिनरी और कंडीशनल टाइप ऑफ सेंटेंस. Imaginary or conditional type of sentence. So in such kind of sentence, I जदि अच्छी I संगे हमें was use करिवानी. Even if I singular अच्छी हमें कौन लगेगा सेठी where लगेगा. Okay, because it's a case of imaginary, conditional or unreal situation. Okay, so it's a subjunctive condition